जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। आज हैं वापस हमारे साथ सैटरडे स्पेशल के लिए। काफी ऊपर नीचे चल रहा था एक दो हफ्ते से एंड मैं खींच के लेके आया जनरल राजीव नारायण को अपने साथ। पिछले पिछले हफ्ते सर बिजी थे। ही वाज गिविंग अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर जिसके बारे में भी कभी बात करेंगे हम लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था जो जिसके बारे में सर ने बात करी है। मेरी तो क्यूरियोसिटी काफी टाइम से पीक्ड है। मैं तो सर को बोल रहा हूँ उसके बारे में बात करनी है मुझे। वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। लेकिन आज एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग सा चीज हो रही है। क्या हो रही है ये तो सबको पता है। मोदी साहब और शी जिनपिंग की ब्रिक्स के साइडलाइंस पे कुछ बातें हुई हैं। ये बातें क्या हुई हैं, इसका लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जनरल ऑफिसर्स भी बात कर रहे हैं वहां पर। क्या गेम हो रही है इंडिया चाइना के बारे में आज थोड़ी सी लेट्स टॉक एंड फाइंड आउट। सर पहले तो नमस्कार, गुड आफ्टरनून एंड अ सीरियस वेलकम बैक ऑन डेफ टॉक्स। Namaskar, good afternoon, Jai Bharati. Yes, good to be back. Last week I was a bit busy with a national seminar. We'll talk about it later. China के ऊपर ही बात हो रही थी जी जी। and way ahead. And today is interesting. India-China talks. Very clear, nothing came out. हाँ कुछ नहीं है। क्योंकि जब चाइनीज फॉरेन ऑफिस झूठ के साथ शुरू करता है कि इंडिया मांग रहा था टॉक, तो वहीं पे मतलब मामला क्लियर हो जाता है कि हुआ कुछ है नहीं। एंड इन एनी केस बॉर्डर टॉक्स पे ऊपर मेरे को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि जब तक शी जिनपिंग के छित्तर नहीं पड़ेंगे वो कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो मेरा अब वही है कि साइडलाइंस में मतलब कोई साइडलाइंस में मतलब ऐसे बायलैटरल टॉक नहीं हुआ था। लाउंज में बैठे थे, बात किए। एविडेंट है कि उसको बताया गया था कि बॉर्डर जब तक नहीं होगा कुछ नहीं होगा। तो लोग उम्मीद जड़ाए रखे हैं कि शायद कुछ हो जाएगा, होगा नहीं। और जब तक उसी का खेल उसी के साथ नहीं खेलोगे और उसके वीकनेस को टारगेट नहीं करोगे, ये मानेगा नहीं। शुरू और एंड में यही कहूंगा, शुरू में भी लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नहीं मानते। एब्सोल्युटली। जो इस तरह के नौटंकी पे आता है उसको थप्पड़ मार के सीधा करना। उसको आप कल्चर्ड वे में नहीं डील कर सकते, क्योंकि उनके यहाँ कोई कल्चर नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत कल्चर है तो एग्रीकल्चर है, और कुछ नहीं। ठीक है, तो वायरस ही इनके कल्चर है सर, वायरस ही कल्चर। जी, वायरस ही कल्चर है सर, वायरस क्रिएट करते वो हैं। तो है, पायरेसी कल्चर तो पूरा है, दाब के। तो ये सीधे इससे मानते नहीं है, जूता पड़ेगा तो मानते हैं। जी। और मैं आगे आपको पॉइंट्स नोटिस किए हैं मैंने, तो वो बताऊंगा। बाकी अप टू यू आदि, हाउ यू वांट मी टू कैरी इट फॉरवर्ड। सर सबसे पहले मेरे को ब्रिक्स के बारे में तो काफी नैरेटिव चला है, लेकिन मेरा एंड मैं अपने आप बोलने वाला हूँ, मेरा जो बिलीफ है, ठीक है, एंड आई एम पुटिंग माय नेक ऑन द लाइन। मैंने ये चीज अपने चैनल में भी बोली कल। संजय दीक्षित जी के साथ भी बात हो रही थी, उनके चैनल में भी यही चीज बोली मैंने कि साहब आपने इसको बॉर्डर पे आप घसीट के लेके आए हो। यू हैव ब्रॉट हिम देयर। आपने बोला यार देखो तुमको चाहिए एक्सपेंशन ब्रिक्स में, ठीक है, ठीक है, आ जाओ उधर पे। तो आपको ये पता है कि वहां पर कुछ होने वाला है नहीं बॉर्डर पे, बट आप उसके साथ एक गेम खेल रहे हो ताकि वो एक बैकफुट पे जाए। बिल्कुल सही, बहुत बैकफुट पे है, क्योंकि जो 6 कंट्रीज आपके साथ है, आए हैं एड ऑन। इथियोपिया न्यूट्रल है। ईरान को समझ नहीं आ रहा है कि चीन के साथ जाना है कि आपके साथ जाना है। बाकी 4 आपके पाले में। हम्म। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, अर्जेंटीना आपके पाले में। अर्जेंटीना ब्राजील को मना लिया था, और अर्जेंटीना और ब्राजील और इंडिया ये 3 खड़े थे, वो ब्रिक्स करेंसी बिल्कुल नहीं चलेगा जब तक पूरा डिटेल डिस्कशन, इकोनॉमिक फॉल आउट सारा कुछ क्लैरिफाई नहीं होता, नहीं होगा। क्योंकि दोनों, अर्जेंटीना और ब्राजील, काफी डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए वेस्ट के साथ। जी। और उनको पता है चीन तो क्या है, कुछ नहीं, वो तो खा जाएगा उनको और बीज थूक देगा बाहर। ट्रस्ट की बात होती है ना। अब इथियोपिया कितना ट्रस्ट करता है क्या है, उस पे भी बड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं।
उसने जो रेलवे लाइन बना के दिया है इथियोपिया को, ऑब्वियसली वो डेट पे चल रहा है। इन्हें जहां जहां जैसे केन्या में बनाया है, इथियोपिया में बनाया है, ट्रेन जो होता है फ्रेट से ज्यादा पैसा मिलता है, पैसेंजर से उतना पैसा कलेक्ट नहीं होता जितना फ्रेट ट्रेन से पैसा होता है। अब फ्रेट के चार्जेस चाइना ने इतना ज्यादा कर रखे हैं दोनों जगह कि भाई बाय रोड इट इज चीपर, तो कोई ट्रेन में जा ही नहीं रहा है। दूसरी चीज है वहां पे सब कुछ, मतलब ट्रेन के अंदर भी सारे बंदे जो ट्रेन पे सर्विस कर रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर दो चार ही होते हैं एक ट्रेन में लोकल्स, बाकी सारे चीनी हैं, तो सारे लोकल खफा हैं कि ट्रेन हमारा चला चीनी रहा है। टिकट कलेक्टर हो, ड्राइवर हो, पीछे आपका ब्रेक वैन में बैठा हो, आपका गार्ड हो, ट्रेन के अंदर जो खाने पीने का सर्विस देने वाला हो, सारे चीनी है। सो इन्हें आई वुड से दिस ब्रिक्स हैज बीन अ बिग फेलियर फॉर, और स्टार्ट ही उसका मैं कहूंगा कि बहुत ही यू कुड से क्या बोलते हैं, बैड लक से हुआ था, डबल बैड लक। एक उसकी न्यूक्लियर सबमरीन येलो सी में सिंक हो गई, उसका तो काफी निकल के आ रहा है। It is pretty much confirmed. एक्चुअली मतलब वो कैडेट ट्रेनिंग के लिए लेके गए थे और अपने ही एंटी सबमरीन एंकर हुक चेन में फंस के वो खत्म हो गया, सारे मर गए। एक वो हुआ और चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया, और सारी दुनिया चंद्रयान 3 के बारे में बात कर रही थी। ने जैसे ही अपना चैनल में देख के लैंड हुआ, मैं जान करके बीबीसी, सीएनएन, फ्रेंच न्यूज चैनल, सिंगापुर न्यूज चैनल, ये अपना जर्मन न्यूज चैनल, ऑस्ट्रेलियन न्यूज चैनल, रशियन न्यूज चैनल, सब तकरीबन स्किप करता गया था। आधा घंटा करीब में स्किप करता गया। चंद्रयान के बारे में ही और इसरो के बारे में ही बात हो रही थी और कोई न्यूज नहीं था। ब्रिक्स बैकग्राउंड में चला गया। अपने सारे न्यूज चैनल में ब्रिक्स वाज इन द बैकग्राउंड जी, एज इफ ब्रिक्स इज नॉट हैपनिंग। तो ये मतलब अभी मौका ने, अभी मैं कहता हूं तवा गरम, सेक लो रोटी इसके ऊपर, इसकी शी जिनपिंग की रोटी इस पे सेक लो। और मेरा सबसे पहला एडवाइस होगा गवर्नमेंट को कि आप अपने टॉक्स के दायरे में फिक्स्ड कभी मत रहिए कि हम डिसेंसी में हैं। आपको ज्यादा जाना चाहिए। तो पहले एक तो ये है, अभी जैसे हम कर रहे हैं बॉर्डर सबको इकट्ठा कर रहे हैं, तो बॉर्डर टॉक से कोई मतलब नहीं है। शी जिनपिंग को बोलो इंडिया आ बात करने के लिए, हम नहीं आते, तुझे अब हमारी जरूरत है, इधर आ बैठ, वी विल टॉक एवरीथिंग एंड क्या क्या है। जब ये बॉर्डर का बोलता है, कई दफा बोलते, जब हम बोलते थे कि भाई एलएसी पूरा एक साथ मत करो, जहां जहां कर सकते हैं, जैसे सेंट्रल सेक्टर है, काफी एरियाज है ईस्टर्न सेक्टर में, उसको रिजॉल्व कर देते हैं, डिमार्केट करते हैं, बाकी में बात चलेगी। ये बोलते हैं पूरा पैकेज करना। और अभी मेरे हिसाब से ये सबसे बड़ी गलती की थी, हमने पूरा पैकेज नहीं लिया। पेंगोंग सो और कैलाश रेंज को अलग किया, उसको अलग किया, दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम। उन्हीं के लैंग्वेज में बात करना है। अभी इनको बोलना चाहिए, अगर वो कहता है आपको कि भाई तवांग हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बट अक्साई चीन हमको दे दो, हम तवांग ड्रॉप कर देंगे। हमें ये बोलना चाहिए कि भाई साहब कैलाश, मानसरोवर, चुंबी वैली ये हमारे लिए जरूरी है, हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है यहाँ पे, ये सब हमको दे दो, तुम अक्साई चीन ले लो। देगा? और इसका डेप्थ हमको चाहिए कि ये सारा चाहिए, और इसके आगे 2 रिज लाइन, जो फर्स्ट रिज लाइन तक मेरा इलाका होगा और सेकंड रिज लाइन के पीछे तुम्हारा होगा, और इन दोनों के बीच में बफर जोन होगा। उसको उसी के लैंग्वेज में बात करो, तभी समझ आता है। उसके साथ साथ बोलो
कि भाई सिविलाइजेशनल तुम बोल रहे हो इनिशिएटिव, हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। काशगर, खोतान, लासा, बुद्धिज्म इंडिया से गया था, तो हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है, तो हमारा हक बनता है वहां पे। जिस तरह से तुम तवांग पे हक ले रहे हो, हमारा हक बनता है वहां पे, गेट आउट, वो हमारा काशगर इलाका है। चाहिए हमको वापस, काशगर चाहिए जी। बिल्कुल, काशगर खोतान पे तो बुद्धिज्म इंडिया से ही गया था, कश्मीर से गया था सारा। और लासा टिबेट तो बुद्धिज्म हमने दिया है, तो हमारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। जैसे तुम सिविलाइजेशनल कनेक्ट ले रहे हो तवांग को, मैं सारा सिविलाइजेशनल कनेक्ट लेता हूं ना। अब तुमको बताता हूँ सिविलाइजेशनल कनेक्ट क्या है। बोलो ये हमारा है, अब आओ बात करने के लिए। निकाल लो महाभारत उसी, का मैप और दे दो इनको। हाँ, उसी का गेम उसी के साथ खेलो भाई साहब। जी। आप हमसे ये बोल रहे हो, तो चलो हम ये बताते हैं आपको। आप तो कच्छों में दौड़ रहे थे जब ये सब हो रहा था। अच्छा, देन गो फर्दर। इनका क्या होता है, जब भी ये आता है कोई ना कोई इंसिडेंट कर देता है एलएसी में। हमारे पास भी है QPQ ऑप्शंस यार। शील्ड ऊपर करो, कर दो वहां पे, स्टे देयर। रोएगा वो, रोने दो। अगर जी वो कर ट्वेंटी सकता है तो हम क्यों नहीं करें? G20 से पहले। या ठोको उसको वहां पे। देयर आर मेनी एरियाज वेयर यू कैन ऑक्यूपाई। कुछ नहीं कर जी। पाएगा, फिर क्या बोलोगे तुम? वो बोलेगा मैं G20 नहीं आता। बोलो ठीक है, गेट लॉस्ट, डोंट कम, थैंक यू। टाटा। तो अब वी डोंट नीड हिम, ही नीड्स अस एंड ही नीड्स द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके साथ साथ उसको बोलो सारे नॉर्थ ईस्ट मिलिटेंट्स और टेररिस्ट के ऑफिसेस आपके रुइली में सारे बंद, और जितने वहां पे सारे हमको हवाले करो, वरना बातचीत नहीं होगी। यू एक्सपैंड दायरा, जैसे वो एक्सपैंड करता रहता है, एक्सपैंडेड। बोलो ये सारा होगा, उसके बाद ही हम आपसे कुछ बात करेंगे। नहीं निकालता है, मना करता है, FATF में कंप्लेन कर दो कि सपोर्ट कर रहा है वो, फंडिंग हो रही है रुइली में और ये सारे जगह पे, यूनान में इसके मिलिटेंट्स हैं, ग्रे लिस्ट में डिमांड डाल दो उसका। दिस इज द प्रेशर यू गॉट टू स्टार्ट ब्रिंगिंग ऑन चाइना, तभी अकल आएगी उसको। एंड साथ साथ यू मे नॉट चेंज योर पॉलिसी, ऑर्डर MEA में एक स्टडी विद ऑल एक्सपर्ट टू रिव्यू इंडियाज वन चाइना पॉलिसी। वही काफी होगा सर। नरावने वही साहब के काफी है, वहां जाने से ही तो घबरा गया था वो। या वही काफी है। आपने ऑलरेडी इसको डिमांड दे दिया होगा कि तिब्बत में, यहां से गया था तो मेरा हक है तिब्बत के ऊपर, एंड देन यू से वी वांट टू रिव्यू वन चाइना पॉलिसी। अभी नेक्स्ट इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली ही इज ऑन द वीकेस्ट विकेट गोइंग अराउंड। जी। You could see from his body language also, and you were also referring to in your talks. हिला हुआ था। It was not the Xi Jinping of 2017 when he brought the BRO forum. बिल्कुल दादा जैसे बैठा था। यहाँ he was looking like a lost bird कि क्या हो रहा है, डरा फ्रस्ट्रेटेड। हुआ, right? So now is the time to pay back in the same coin to him with his own three warfare strategy. Penetrate his Weibo and WeChat. ठीक है, बॉट्स डालो, उसके लोकल VPNs को हैक करके उसमें से निकालो, भर दो उसके एंटी, क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन CPC एंड द कॉमन मैन, CPC एंड शी जिनपिंग, PLA एंड शी जिनपिंग, और फिर देखो क्या मजा होता है उसके बाद। तवा गरम है भाई, तवा गरम है। ये मौका ये बार बार नहीं आता। और आसपास के रीजन में भी एंटी CPC इंफॉर्मेशन वॉरफेयर शुरू कर दो। एडवाइस दे दो इनको, चाइनीज का डेट है, मना कर दो। किसके पास जाएगा चीखने के लिए कि मेरा पैसा नहीं दे रहा? क्या कर लेगा? बिकॉज वो बोलेंगे सारे ट्रीटी लेके आओ। कैन ही ब्रिंग ऑल द ट्रीटीज? He can't. There are so many things he has put inside there which is against international norms. और जो जो उसने स्ट्रेटेजिक एसेट्स आपसे लिए, नेशनलाइज कर दो, चीनियों को जूता मार के बोलो निकाल दो। क्या कर लेगा? व्हाट विल यू डू? डूबे तो आप वैसे ही हो, उसके पैसे तो आप वापस नहीं कर सकते।
वो आपको पैसे देने वाला नहीं है, फेंक दो उसको बाहर, बोलो नहीं देता, कर ले जो करना. Simple. This is the advice he had given Hugo Chavez when he was making his inroads in Venezuela to tell Americans that we will not pay back the loans. That's why the Americans are angry. To tell the same thing. Do the reverse thing. Tell the same thing. Okay. And एक मिनट, मेरा बैटरी लो चल. ओके. और kill two birds with one stone. जॉर्ज सोरोस को इनके साथ लिंक करवा दो, ओपन सोसाइटी को, कि इसको फंड कर रहा है, और फिर देखो तमाशा. If George Soros organization is linked with what the Chinese are doing, वैसे ही भागता फिरेगा कि नो 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 नो, yes yes yes, let him start doing. Why should I keep waiting कि वो हिंडनबर्ग के अगेंस्ट दोबारा रिपोर्ट निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, हम निकाले ना उसके अगेंस्ट. We know a whole lot of black money and what drug money and what all is doing, उसका रिपोर्ट निकाल दो, किसने रोका? Then let him start running around. Okay. अब WTO में प्रेशर डालना शुरू करो, कंसेंसस बिल्ड करो, प्रेशर डालना शुरू करो. That when China was brought into the WTO, it was told that they had given an excuse that immediately हम चेंज नहीं कर पाएंगे in due course of time. 2 decade हो गया, चेंज करता तो ठीक, नहीं तो आउट ऑफ WTO. Give him a cut-off date, 6 months, 3 months, 8 months. He has to change his policies in line with the international organizations, or he is out of WTO. Why? Out of WTO means the de-risking, decoupling will have to be done. No country can deal with them. Because then all the Japanese, the Taiwanese, the South Koreans will be on notice. Ki bhai sahab, is not in WTO. What are you doing there? Anything happens, then you can't come to WTO. These are the kind of pressures, diplomatic pressures, now you have to start building on China to put him in place. And like I said, link border trade, information warfare, everything together. Bolo kattha deal hoga, and no talks on anything till major consensus and time-bound manner. There is nothing called partial pullback. Everything or nothing. Full stop. I'm happy they have banned that rice trade and case by case basis. घुटने टेक के आना पड़ेगा चावल के लिए उसको. But there is no other. 30% of his rice was going from India. Yeah. Now all the rice prices have gone through the roof. No other country can supply him that. That must also be in the back of his mind कि अब चावल के लिए इसके पास. And that is the reason why I think he must have been pushing कि सारे काटो और राइस खुद ग्रो करो, कि 30% इंडिया पे डिपेंडेंसी है. ओके. क्या वो हिलसाइड के ऊपर कुछ बना रहे थे? हाँ, वो तो पागल है ना. दे हैव कट अवे ऑल द कैश क्रॉप्स. एक्चुअल कैश क्रॉप्स राइप होने वाला था, हार्वेस्ट होने वाला था, वो काट दिया डोजर चला के सारा. एंड देन पूरे हिल साइड से उसने ट्रीज निकाल दिए और स्टेप फार्मिंग करने बोल रहा है. बारिश हो गई है इतनी, अब पता नहीं कितना बचा होगा. एंड हैविंग डन दिस, नाउ कम्स द double whammy where India has said कि case by case basis पे ही देंगे. There was a reason why India did, because what India had been saying for a number of months was that when we are exporting, even when it goes through the UN, the rich countries buy it, hoard it, make the prices go up, and then sell case by case to other countries. So India said, sorry, I'm not getting into that. I'm not giving anything. जिसको चाहिए मेरे पास आओ. कंट्री G2G ट्रांजैक्शन होगा ऑन केस टू केस बेसिस. तो जो रिच कंट्रीज हैं उनको चाहिए नहीं, वो आ नहीं सकते. ग्लोबल साउथ इज हैप्पी बिकॉज नॉर्मल रेट पे इंडिया उसको दे देगा. चाइना सबसे दुखी है कि अब चावल के लिए कहां जाए. इन्हें the whole issue, like I said at start, is speak to him in the language that he understands.
जो भाषा वो यूज करता है आपके साथ, आप भी वही यूज करिए उसके साथ. And classic example in these, like I've always been giving, is Mahabharat, Arjun killing Karn. जब उसका पहिया फंस गया था and he was down, अर्जुन ने Yeah. ताना and he said ये छात्र धर्म के विरुद्ध है, and Krishna taunted him. साला, where did your छात्र धर्म go when you 8 of you surrounded Abhimanyu and killed? You said 1-on-1, और तूने तो पीछे से तलवार मारा था, तब छात्र धर्म किधर गया तेरा? You will not follow छात्र धर्म and you want others to follow छात्र धर्म. He directed Arjun, इसकी बात मत सुन, इसने छात्र धर्म का पालन नहीं किया है, इसके साथ छात्र धर्म का पालन करने की जरूरत नहीं है, मार दो उसको. And he killed him. Classic. And it's very clearly given. And it is a clear indication, जिस लैंग्वेज में वो आपके साथ डील करता है, आप भी उसी लैंग्वेज में उसके साथ डील करो, तभी अकल आएगा. वही मैं कह रहा हूं, तभी अकल आएगा चाइना को. ये कोई डिसेंसी का लैंग्वेज नहीं होता कि नहीं नहीं हम उसके जैसे नहीं है, हम डिसेंट है. देयर आर प्लेसेस वेयर यू हैव टू बिहेव कल्चरली, बट देयर आर प्लेसेस व्हेन यू हैव टू get down to the level of the language and dirty your hands and do things his way. जी. This is the time now to do things his way. This is what I would say about talks. Otherwise you can keep talking till the cows come home. सर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरे को दिख रही है कि आपके साथ वो, देखिए, इंगेज तो करना नहीं चाहता. No. वो तो पता ही है, ठीक है. आप उसके हो लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटर हो, आपको वो उसको पता है इस पूरे दुनिया में एक्चुअली दो ही कंट्रीज है उसके अगेंस्ट खड़े हो सकती हैं. वन इज द यूएस मैरिटाइम उसमें, और लैंड में हम लोग खड़े हो सकते हैं उसके साथ. तो देयर इज नो अदर वे. No, मेरे even को ये चीज maritime in Indian Ocean, he doesn't have the reach. नहीं, यहाँ पर नहीं सर. वो साउथ चाइना सी में उस तरफ यूएस की तरफ से है, और हमारी हाँ. तरफ से तो इधर है. इधर पे तो आएगा नहीं, बेचारा मरेगा. सर अभी आप जो हमने एक कभी बात करी डिप्लोमेटिक प्रेशर की, हमने बात करी कि ये ब्रिक्स में और इधर उधर हमने थोड़ा प्रेशर डाला सर. मैं थोड़ा सा जूम आउट करना चाहता हूं सर. आप, मेरे को आपसे ये पूछना है सर, जो आप अभी इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, आई मीन यू नॉट यूजिंग दोज वर्ड्स, बट आप जो काम कर रहे हैं बेसिकली इंडो पैसिफिक एक्सपेंशन है सर. ग्रीस में जाके बैठे हुए मोदी साहब पेरेस पोर्ट में बात कर रहे हैं, सुएज कनाल में, हाइफा में आपका क्या बोलते हैं वो, इंडिया मेडिटेरेनियन अरबिक कॉरिडोर जा रहा है. तो आप भी अपने काउंटर एक बना रहे हैं उसके साथ. इसके अंदर सर मेरे को जो दिखता है सर, जो अभी आपकी एंगेजमेंट शुरू हुई है, वेस्ट के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. वेस्ट मतलब ये जो मिडिल ईस्ट एरिया में, मेरे को साउथ ईस्ट एशिया में बात करनी है सर. ये जो हमारे 3 चीफ साहब गए थे वहां पर ताइवान में, उसके बाद रिटायर्ड चीफ थे, उसके बाद नरावने साहब आल्सो स्टूड विद समवन फ्रॉम द हुइगर्स, एंड उन्होंने बड़ा एक There were two इंटरेस्टिंग people, the local Tibet government का बंदा था जी and उइगुर का एक वो था. जी, वहां पर उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज लिखा. एंड नरावने साहब, मैं थोड़ा बहुत, आई मीन आई डोंट नो हिम पर्सनली, बट जो मैंने उनको ऑब्जर्व करा, ही इज नॉट अ वेरी He's फ्रिवलस a पर्सन, quiet person. वेरी He's a quiet फोकस्ड. person, मतलब से बात करते हैं. हाँ, जब वो लिखते हैं सर कि फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द हुइगर नेशन, एंड लास्ट में उन्होंने लिखा एवरीबडी डिजर्व्स फ्रीडम. सर ये क्या है, ये इनकी पर्सनल फीलिंग्स है सर आपके No, हिसाब से? ऑब्वियसली आई डोंट नो इफ यू हैड एनी इंटरेक्शन और एनीथिंग लाइक दैट, और इज ये कोई पॉलिसी शुरू हुई है सर? yes, this is a policy. You don't have 3 retired service chiefs going there. किसी ने उनको बोला है बुलाने के लिए, किसी ने बताया है, and then they go and talk there. Similarly, the retired service chief is being called there. He is going to share space. Someone from MEA would have briefed him, and he makes a point. These are things, and till now the Chinese have not known how to react, because this is a major indicator of a policy shift, and it is building on this that I said that just order a study to review the one China policy, the way ahead. So they will link
3 चीफ वहां गए, एक चीफ इनके साथ खड़ा होके ये बोल रहा है और एमईए तो बोल रहा है कि वन चाइना का रिव्यू करके पॉलिसी को रिव्यू करो और वे हेड निकाल के दो। अब वो रिपोर्ट 2 साल बाद 3 साल बाद आए, बट आग तो लग गई वहां पे। 20 साल बाद भी आए, फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। फर्क नहीं पड़ता, आग तो लग जाएगी ना। दैट इज द काइंड ऑफ प्रेशर यू गॉट टू स्टार्ट पुटिंग हिम एवरीवेयर। पुश हिम। तवा गरम है, फिर बोल रहा हूं तवा गरम है, यही टाइम है। You remember how we spoke about GB and people were laughing. Today GB is the hottest topic going around. सर लोगों ने हमको ये बोला था, तुम कहाँ जाते हो, क्या पाकिस्तान तोड़ दोगे? बिल्डिंग castles in air and all, पता नहीं क्या क्या कमेंट्स आए थे, बट अब देखो GB is the hottest topic going around. सर आपने और हमने ये भी बोला था ना, पाकिस्तान टूटने वाला है। मंजूर बिल्कुल। पश्तीन ने क्या ऐसी कुछ बोला ना सर की? हाँ, सोमालियाइजेशन। बट यू नो अभी पाकिस्तान तो टूटने वाला है, हमने अभी बड़ा तो लॉजिक yesterday बताया था सर। yesterday I was listening, किसको सुन रहा था, he commented about some political analyst in Pakistan telling if अगर पाकिस्तान नहीं सुधरेगा तो 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। और वो 4 हिस्से हम बात ही कर रहे थे। हम कर चुके हैं। हाँ, वो कह रहा था 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा चाहे पाकिस्तान, सुधरेंगे नहीं। नहीं, पाकिस्तान तोड़ना तो सर बहुत लोगों ने बात करी है, लेकिन किस तरह से, किस जगह पे, वो सब फैक्चुअल जो एक बैकग्राउंड के साथ हमने बात करी थी। बट सर अभी इसका भी यही है, मैं कह रहा हूँ कि ये तवा गरम है, अभी ये शुरू किया है, हाँ, इसके ऊपर बिल्डअप करके अब धक्का देना शुरू करो उसको। अकेला पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। आज अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो 2 ही देश हैं जिसकी तरफ वो देख सकता है। फर्स्ट इमीडिएटली नॉर्थ कोरिया को देखेगा एंड होपफुली ही विल लुक टुवर्ड्स द पाक आर्मी की कुछ कर दे। दैट्स अबाउट ऑल। एंड पाक, आई सेड होपफुली फॉर पाक आर्मी बिकॉज ही डजंट नो कि वो पलड़ा किस तरफ टिल्ट हो चुका है। अभी तो टिल्ट इज गोइंग टुवर्ड्स द यूएस वे। So will the Pak army do anything for him? So then he's left only with King Jong-un, and I don't know सर वो what he will do. पाक आर्मी है कि सऊदी अरेबिया की एक्सटेंडेड आर्मी है, इसके बारे में कभी बात करेंगे हम लोग। अब जो भी है, they burnt the bridges in most of the places ना। या वो अब आप बोल लो कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करके बैठ जाओगे तो क्या करोगे। अब उन्हें इतने छेद कर रखे हैं थाली में, कुछ रुकता ही नहीं है। जी। बट सर अभी इंटरनली देखते हैं थोड़ा चाइना को, बिकॉज देखिए हाँ, कहीं ना कहीं चाइना को एक चीज, अभी शी जिनपिंग को एक चीज तो समझ में आ रही है कि यार उसकी कुर्सी अभी ज्यादा टाइम है नहीं। और मैं ये वापस लेके जाना चाहूंगा सर, आपका हमारा एक पॉडकास्ट था जब हमने शी जिनपिंग साहब ने दोबारा क्राउन पहना था, आपने 3 ऑप्शन बताए थे सर उस टाइम पे। हाँ बिल्कुल। या वो आएगा फुल फोर्स में, मतलब एकदम तलवार निकाल के आएगा, या वो आएगा उसको बिठा के रखेंगे, उसको बोलेंगे बेटा यहाँ साइन कर, वो कर देगा चुपचाप, या वो आएगा फुल फोर्स में और उसका धीरे धीरे करके पत्ता काटना शुरू होगा। हो रहा है अभी ये। क्या लगता है सर, क्या हो रहा है आपको? क्योंकि वो जो भी अंदर होगा सर, उसका इम्पैक्ट या ताइवान पे आएगा या भारत पे आएगा। तो अभी क्या हो रहा है उसको सर? अभी डर ये लगा हुआ है कि उसको ये एक तरह से मैसेजिंग गया हुआ है यूएस से ताइवान के तरफ, या कहीं भी कुछ करे, चाहे वो ताइवान के वो मेनलैंड के पास जो आइलैंड्स है कुछ करे, तेरे ये 7 आइलैंड्स गए। साउथ चाइना सी के 7 आइलैंड को हम लेवल करते। नाउ ही हैज टू टेक अ चॉइस, so that will be one of the biggest loss of face for his own थोड़ा सर, PLA। सॉरी थोड़ा सा डिटेल्स में देखिए, वो थोड़ा ऑडियंस स्किप ना कर जाए। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोली है, थोड़ा सा एक्सपैंड करके बताइए सर, आपका हाँ, किस चीज से अभी हिंट है? इसने साउथ चाइना सी में 7 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए हैं, जिसमें 3 तो पूरा रनवे बना के सब कुछ बना के सारा कुछ किया हुआ है। बाकी 4 जो हैं आर सपोर्टिंग फॉर रेडार्स हैं, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, सब है। वो 3 बड़े इसमें भी है, 4 छोटे में भी है। ये इसने सारा कुछ बनाया हुआ है और सब
सातों आर्टिफिशियल आइलैंड में डॉकिंग फैसिलिटी है, शिप्स आके जा सकते, सब कुछ है। और जो बड़े हैं उसमें तो फ्यूल है, एम्यूनिशन के स्टॉकिंग है, एयर डिफेंस के रेडार्स एंड इफ रिक्वायर्ड एयर डिफेंस मिसाइल्स, आई थिंक एयर डिफेंस मिसाइल्स भी लगा रखे हैं, सारा कुछ लगा रखा, मिलिटराइज कर रखा। अब रीच उसके पास केवल अपने मिसाइल से है, ज्यादा है नहीं। उसको सबसे ज्यादा एक झटका मैंने और नहीं बताया था, ट्रिपल वैमी, आपका डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन वागी स्कॉर्पियन स्टार्टेड फ्रॉम कारवार, वन स्टॉप एट कोलंबो, और वहां से 4000 नॉटिकल माइल्स इट हैज ट्रेवल्ड थ्रू द इंडियन ओशन and gone straight and docked after I think about 7 days at Fremantle in Australia. उसके सबमरीन में इस तरह से ट्रैवल करने का दम है। यानी लिटरली ब्लू सी जो बोलते हैं, ब्लू सी स्ट्रेट लाइन, देयर इज नो हैबिटेट आउट देयर, नथिंग, and you've gone straight line all the way down to Australia. इसको बोलते हैं ट्रेन्ड क्रू। आपके जो सबमरीन आता है, इट कम्स थ्रू द सुंडा स्टेट्स, hugs along that Malaysian thing, keeps close to hugs along the Indonesian islands, then छोटा सा it will cut across your Andamans and come towards Sri Lanka, and then वहां से it will cut across and go straight to Karachi. ये रूट देखो जो पास पास से जाता है, और ये रूट देखो जो कोलंबो से सीधे यहाँ आया, और यहाँ से निकल के इट्स सपोज टू गो बैक स्ट्रेट टू कारवाड़ विदाउट गोइंग टू कोलंबो. दैट शेक्स अ कंट्री कि दिस इज अ न्यूक्लियर सबमरीन भी नहीं, इट्स अ डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन. हर चौथे पांचवें दिन इट हैज टू कम अप फॉर अबाउट 2-3 hours to charge its batteries and then go down and go. It's not that, it's the training of the crew, isolation. जी. Okay. तो ये डर उनको लगा रहता है कि भाई उस is he ready to send his submarine directly across to this place, knowing that there's going to be a heavy attack by the US standoff missiles from their aircraft, ships, everything onto these islands. और ये तो आर्टिफिशियल आइलैंड है, कितना टिकेगा यार, ढह जाएगा. अब ये डर है कि अब 3 फ्रंट हो गए. अगर वो ताइवान में जा रहा है तो साउथ चाइना सी भी है, इंडिया के साथ तो खड़ा ही है. What happens if India opens up? Finished. Then what do you do? The very fact that the 3 ex-service chiefs have gone to attend in Taiwan is an indicator. तो कुछ करेगा तो हमारे. अलग से उनकी थाइवानीज एमईए के साथ क्या बातचीत हुई है, एमएफए के साथ, उनको पता नहीं. What messaging have they come with? And now you're scared, na? You're not capable. आपके पास तो 2 ही ग्रुप आर्मी बचा है यहाँ पे इंडिया के साथ. बॉटम लाइन, you're not capable. बहुत बड़ी चीज बोली है सर आपने ये. Your whole structure of PLA, your planning of PLA, your strategizing of PLA was one front at a time. If you look back throughout, whenever they went hard against Taiwan, they had peace with India. Peace and tranquility. हम छेड़ेंगे नहीं आपको. जी. जब इंडिया के साथ किया था तब ताइवान के साथ कुछ नहीं हुआ था. Samdurongchu 87 with India, nothing on Taiwan. You signed in 93 your border peace and tranquility agreement. 95-96 you started with Taiwan. You got to link all this. You started with Taiwan. You continued with Taiwan. You had nothing with India.
इसी ने कूंडा कर दिया, सब कुछ फाड़ फूड़ के गटर में फेंक के सबको एक्टिवेट कर दिया, सेंकाकू भी कर दिया, साउथ चाइना सी भी कर दिया, ताइवान भी कर दिया, इंडिया भी कर दिया. नाउ ही डजंट नो व्हाट टू डू. 3-2-5 ग्रुप आर्मी इसके पास ईस्टर्न एंड सदर्न में है. ईस्टर्न में 3 ग्रुप आर्मी है, सदर्न में 2 है. 5 ये हो गए, 2 अपने पास है वेस्टर्न में, बचे 6. जितना कुछ कह ले रशिया रशिया रशिया, भरोसा नहीं है. 3 में से कम 2 तो वहां छोड़ेगा, एक कोई लेके आएगा. सेंट्रल से कितना लेके आते हो? 4 बचे हैं. अगर 2-2 भी भेज दे तो 4 ग्रुप आर्मी के पास क्या क्या है? घंटा उखाड़ लोगे इंडिया के अगेंस्ट. लुक एट द फ्रंट यार. What will you achieve? And That the is like, way you have built yourself up, a stalemate in against India is a defeat for you. Or should India have go for the QPQ? We have a lot of QPQ plans all along, and you succeed out there. नाक कट गई आपकी. इन्होंने, I remember Raj Shukla had also mentioned about it in your channel. Tangshan के पास, which is next to Tianjin, वहां पे they had done a amphibious landing exercise. And इसके खुद का जो, जिसको अपना भाई समझता है, लंगोटिया यार, बचपन से साथ रहे हैं, जिसको रिटायर हो जाना चाहिए था, but he has kept him again one more tenure. यांग जाओ, क्या नाम है उसका, जनरल साहब, वाइस चेयरमैन ऑफ CMC. He has advised him that you cannot, your PLA is not ready for the amphibious exercise. It was a total failure. अच्छा, it's a total failure when you are not being fired upon. When you get fired upon, फिर क्या करोगे? एक छोटा सा सर अनाउंसमेंट है. आवर चाइनीज फ्रेंड्स हैव कम. गाइस, थोड़ा आप देख लीजिए, हमारे साथ ऑलमोस्ट 1000 लोग बैठे हैं. हमारे चाइनीज दोस्त आ रखे हैं यहाँ पर. There is a beautiful book. I'm forgetting the name of that American colonel who fought in the Second World War. He commanded his unit in the Normandy landings. It was called Follow Me. The name of the book is Follow Me. And he says how difficult it is to get people up when you come under fire. If you're under fire, if you're going, people will go. The moment we go to ground to avoid fire, उनको उठाना बड़ा मुश्किल होता है. It's not easy. And that is where he said comes the follow me. You cannot tell as the officer that chap, go there. You go there. You tell him, give me the covering fire, I'm going there. When he sees you and you successfully reach there, now his morale comes up and he will come after you, and you say, now I am covering you, you come. इनमें वो दम है. हमने तो दम दिखा रखा था 99 में कारगिल में. You look at your officer to men ratio of how many got killed and wounded. That is percentage ratio निकालो. Don't say कि 4 officer थे, इतने 100 गए. No. How many men were there? What percentage of those got killed or wounded? How many officers were there? What percentage of officers got killed or wounded? And it stuck. It's all follow me that we follow. Will you do it? That's why I call them chocolate cream soldiers. अपना वीडियो गेम खेल लो. हाँ, वीडियो गेम खेल लो. That's about it यार. एक थप्पड़ पड़ता है, दुम दबा के भागते हो तुम. And then you're scared to come back कि वो मारेगा. लोकल पॉपुलेशन के पास हथियार नहीं है तो उसको तो डरा धमका के कुछ कर दो. एक बार हथियार आ गई, गोली चल गई ना इनके ऊपर, फिर देखते हैं क्या होता है. Have you operated under fire? Have you operated under shelling? When you don't know which splinter is going to hit you, and yet you are going. Have you done that? You not. Last war you fought and you got a thrashing was 79 war. Yeah. जी. What lessons, if any, have you drawn from that? एक latest colonel को मेजर साहब था तब, अभी उसको जनरल बनाया हुआ है. क्या लेसन्स लेके आया होगा? उसके बारे में तो आप बात ही नहीं करते हो. 79 वॉर इज टाबू. तो
तो चॉकलेट क्रीम सोल्जर से लड़ाई नहीं लड़ी जाती यार. इट्स ऑल ओके. आप फायर पार डेमो दे दो, बोलो मैंने एक्सरसाइज किया है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फायर पार. ऐसे फायर पार डेमो तो हमने बहुत देखे हैं, बहुत किए. सर डेमो तो हम भी कर लें. हाँ, बटन लड़ना दबाने अलग में है, क्या फायर प्रॉब्लम पार है? डेमो देना अलग होता है. कल बिकॉज जैसे वो नहीं, टारगेट्स इन द रेंज डोंट फायर बैक एट यू. हाँ, कल एयर मार्शल हमारा साहब बोल रहे थे ना, बैटल वीडियो गेम में इंडिया को हरा सकते हैं ये लोग. हमारा बैटल इनॉकुलेशन होता है. जी. टारगेट एरिया में ट्रेंचेस बनते हैं, बंकर्स बनते हैं. यू आर सपोज टू गो एंड सिट इन द बंकर एंड योर टारगेट इज शेल्ड. किया है इन्होंने. They shell on you? Yes, on that Oh. target area, on तो it आप and बंकर beyond. के अंदर बैठते हो और आपके ऊपर गोली चलाते हैं. Yes, वाओ. हम अटैक के लिए जाते हैं, हमारे सर के ऊपर से एमएमजी फायर होता है. जरा सा वो गलती करेगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. लाइव बुलेट्स आर फायरिंग. दिस इज कॉल्ड बैटल इनॉकुलेशन. एंड प्लानिंग के मुताबिक वो आरटी शेलिंग होता है. देन यू वेंट गो इनसाइड देयर and there have been like at least once in all battle inoculation they don't fire on you. You go in there, the fire is ahead. One of the battle inoculations they said let us see DF SOS, DF direct firing, and your directional firing SOS. SOS is on top of you. We went through that. Shit. You're going for the assault. The MMG is firing from here. MMGs are firing from there. RT shelling is going on. Mortar shelling is overhead going on. RT shelling stops about 100-meter shot when you reach the objective. कोई थोड़ा आगे निकल गया तो है, चल रहा है. That is called battle inoculation. Live what you're doing. Not this. खड़े हो, अटैक हेलीकॉप्टर फायर करके चला गया, आप टैंकों में बैठे हुए. That means nothing. That, to my mind, is a fire part demonstration. That scared me a little bit, so honestly. I mean, but yeah, I mean, one can understand कैसे ये चीजें होती होंगी और किस तरह से टफनिंग We होती do है. our tank firing. So we do the complete squadron firing on the move also. That is done. That is not considered battle inoculation. Battle inoculation is this. You get down, even the tank man is on foot with his personal weapon and you are charging up to the objective. And under RT shelling, and you get your RT shell, you do everything. That is battle inoculation. Injuries भी होती होंगी सर. You get used to the sound and everything. Injuries भी होती होंगी. हाँ जी. Injuries भी होती होंगी सर. मैंने तो once a year होता था. मैंने about 8-10 साल किए. I have not seen anybody got injured. But that just tells you one, the precision of fire, कि भाई जो गोली चला रहा है इतनी परफेक्ट चला रहा है कि उसको पता है यहाँ नहीं डालना, यहाँ डालना है. यहाँ डालो. और ये चीज और बताता है, रेजिमेंटेशन है जो ट्रूप्स की, जिसको पता है यहाँ गोली जाएगी, मेरे को यहाँ नहीं जाना. No, the plus you get to understand the battle sounds. You're hearing the battle sounds. To some extent, that fear of that firing and shelling that is going on goes from. That is what I would say saw me through the Kargil. Dras में इतनी shelling होती थी. One didn't bother much about. The other issue is, as a leader, even if you have, I will say, anybody who says he has not felt fear inside is lying. Courage is courage. You overcome that fear and move ahead. Now you cannot show this fear out to your men. Like so many times we used to go to the brigade headquarters. हमारे ऊपर तो दिख जाता था, मीडियम शेलिंग शुरू हो जाता, splinters going right left, you can hear the splinters. The splinter which comes on you, you will never hear. The RT shell which comes on you, you will never hear. If you hear the whistling sound, you know that it's gone beyond. Shell सुई सुई निकल रहा है, मतलब अगल बगल से निकल रहा है. जो तेरे ऊपर आएगा तेरे को पता नहीं. You cannot show fear there when you're going somewhere with the men for doing a task. Your men will not do it, yaar.
Sir, just 1 second. I want to ask the audience: should I keep this Wang Ta character around here, or should I block it? Because I don't mind. इनको सुनने दो, कोई problem नहीं है. आप लोग बताओ. This is a democratic forum. बाकी कोई टेंशन नहीं है यार, और लेके आओ. मैं तो उनको पिछली बार भी बोला था, आने दो और लेके आना, अपने जरा दोस्त यार को भी लेके आना, कोई टेंशन नहीं है. एंड आई नो इन सबको हिंदी आती है, ठीक है, इन या सबको हिंदी जब भी आती तो है. आया, जब भी तो आया चैनल में. इन सबको हिंदी आती तो है. तो इनको, चीनियों को इसीलिए तुम देखो पीछे से छुपके से हमला करेंगे, सामने से लड़ने में जी दम नहीं. जी जी. आएंगे, बट दैट will to do it is not. And I don't blame them also, because 90% of them don't look at Tibet and this region as their country. Biggest point, yes sir. Not Taiwan. Taiwan they still look upon as their country, right? But Tibet, Xinjiang, these regions, they don't look on them as their country. So, and being a single child, he worries that should I lay down my life here for something, will achieve what? At some point in time, I think mentally the population is clear that at some point in time they will be forced to vacate these areas. Then what happens? They link these, I feel, my understanding is they link these like the Soviet Union. So Tibet, Xinjiang, Ney Mongolia, maybe even Manchuria, Yunnan, how much they consider theirs depends, because Yunnan used to have a lot of Muslim population. Now I don't know, must have got Hanaized. Most of the portion of Yunnan, Dali, that was not part of the Chinese kingdom. That was always Dali Viet, Dali and North Vietnam. They were one kingdom, Dali Viet. And the central and south used to be the kingdom of Champa. So will they be as willing to give up their lives fighting as they would for a fight on Taiwan? Whether they are able to do it or not, that's a different issue. But will he be willing to give his life here as he would be willing for Taiwan? That's $1 million question. सर, बट मेरे को एक चीज थोड़ा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज बताया. आपने मिलिट्री बताया, हमने थोड़ा डिप्लोमेसी के बारे में बात करा. मैं ये पूछना चाहता हूँ अभी सर, देखिए चाइना का प्लान क्या है सर? बिकॉज जो मेरे को, मैं कितना इनके अभी देखा, आपसे थोड़ा सीखा के थोड़ी पढ़ाई पूरी करना शुरू हो गया हूँ, थोड़ी अकल आनी, थोड़ी सी बोलते ना 0-1% थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया है. बट एक चीज मैं बताऊं सर, मेरे को कहीं कुछ कंसीटेड एफर्ट नहीं दिखता. क्योंकि कोई भी एक आर्टिकल लिखता है ना सर, उनके बड़े बड़े थिंक टैंक्स के अंदर आर्टिकल लिखते हैं, वो दोनों तरफ से आर्ग्यू करते हैं सर. लंबे लंबे 24-25 पेज के पेपर्स लिखे हुए हैं सर इन लोगों ने इंडिया के बारे में, भारत के साथ कैसे डील करना है, ये करना है, वो करना है, सब कुछ लिखा हुआ है. लेकिन कहीं पे सर पॉलिसी रिकमेंडेशन बोलते हैं ना सर, जो आप लोग पेपर्स लिखते हो, वहां पर नीचे कहीं कुछ नहीं लिखते. Now the whole problem is the entire system on which the strategization of Sun Tzu's vision, which Deng Xiaoping had given, is based on recreation of a middle kingdom. जी. Middle kingdom में ये क्या concept था? Concept of what they called was kowtow. Kowtowing was that, kowtow तो मतलब normal norm अंग्रेजी में बोलोगे means you bowed before the king. वो तो सब जगह होता है, you bowed before the king. When you went there, आप राजा महाराजा के सामने झुक के बात करते हो. That was not the concept which the Chinese follow. I go there as a trader. I will kowtow before the king, emperor. I will give him all the gifts. And he will tell where I can trade and what I can trade.
जी समझ He में is आ not गया। going ओके। to listen to me that what I want to trade you with what I have. He will tell me that okay, you will be allowed to trade at place X and you will trade B things. I may not have B things. Now that is the thing, classic elaboration in BRI. When you look at BRI, it is not what the target country wants. He comes there and says, this is what I'm giving you, this is what I'm making for you. Whether that country wants it or not, whether it's beneficial to that country or not, they're not bothered. If you're wanting to do that, then you should have been really economically strong. And your military should have been strong. टंग शॉपिंग ऐसे गधा नहीं था जिसने कहा था कि 100 साल लगेंगे हमको चुपचाप से धीरे राइज करने में, because he knew that the moment the attention is drawn to your rise, the West is going to cut you off and you will be hit badly because you're totally dependent on exports. अब जिस थाली में आप खाते हो उसी में आपने छेद कर दिया है. You're dependent on exports and you're antagonizing the West. Will he be quiet? He'll not be quiet. So you would neither became economically strong. मिलिट्री तो बाद की बात है. तो आप किस चीज पे आप अपना करना चाहते हो? पॉलिसी रिकमेंडेशन में बोले तो क्या बोले? अगर उसका थिंक टैंक वाला बंदा जानता भी है इस बात को, does he have the spine to stand up and say that this is where you have gone wrong, you shouldn't have done it, this is how you need to go about doing it? 2017, 18, 19 में एशले टेलिस का पेपर मैंने पढ़ा था, वो काफी खोज रहा हूं मैं, कार्नेगी एंडाउमेंट के लिए लिखा था, where he had analyzed and said that at least 2 decades, if not 1, 2 decades early हो गया इनका aggression and he'll pay the price for it. I think he had spoken at some forum. And he is very right. ना आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है, आपकी पीएलए तो थैंक यू है. किस बात की गुंडागर्दी दादागिरी कर रहे हो यार? तो वो कॉमेडी सीन में जॉनी लीवर नहीं आता है गुंडा बन के, तो वही बन के क्या हो रहे हो आप? आपको समझ नहीं आ रहा क्या करो. इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है नहीं. You had a chance during the Wuhan COVID to win diplomatic mileage by telling everything, apologizing, telling everything, पूरा detail. You didn't do that, you went wolf warrior. तो आपकी diplomatic heft भी खत्म हो गई है. Military heft तो थी ही नहीं. Now human resource on which you were targeting the other nations to subvert, वो human resource in your own country has gone anti you. First time ever they have been screaming against a person by name. यार Xi Jinping should go. Xi Jinping के personally protest, absolutely correct. तो क्या यार तुम्हारे सारे रिवर्स जो तुमने सीएनपी के बनाए थे तो कचरा हो गए. अब क्या सीएनपी के लेके बात कर रहे हो तुम? बट बोले कौन? हु विल बेल द कैट? एंड ये नहीं है सर, चाइनीज लोगों को, जो लोग हैं उनको पता है. मैं उस दिन एक ब्लॉग पढ़ रहा था सर, चाइनीज ब्लॉग. हाँ, उसमें बंदे ने शी जिनपिंग का नाम पता है क्या लिखा हुआ है? ड्राइविंग इन रिवर्स एम्परर. बिल्कुल बिल्कुल. And everybody knows that by reversing Mao's policies is how China gained economically. Ever since he has come, he's reversed Deng Xiaoping's policy and he started going back towards Mao. So obviously he is the reverse emperor. Yeah. Just imagine that one person who used to write and Hitler करके इसको शी जिनपिंग को बोलता था, स्नो स्कूटर में 300 kilometers he is fled across the sea to South Korea. साउथ कोरिया मतलब ये हालत है यार. If you speak out against him, दम है सर बंदे में. सैल्यूट टू दैट गाय. I'm just elaborating that why you will not get anything. वो 25 पेज के 50 पेज भी खर्च कर दे, he cannot write anything worthwhile. How will he survive? जी. तो that is why I say तवा गरम है, अब के लपेट लो.
जितना लपेटना एंड एक्सपैंड द बीट, एक्सपैंड योर रीच ऑफ व्हाट यू वांट। जो वो सिविलाइजेशनल बोलता है, सिविलाइजेशनली तो मैं हम तो पूरा टिबेट का पूरा चाइना ले ले, बोलो बुद्धिज्म तो यहाँ से गया था। या तो मेक रिवर्स साइकोलॉजी ऑफ हिज ओन सिविलाइजेशनल इनिशिएटिव ना। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जरा ऑडियंस के क्वेश्चंस लेते हैं। इतने सारे क्वेश्चंस हैं सर, वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 1120 पीपल वाचिंग अस। ओ वाओ, ठीक है, थैंक तो यू प्लीज, थैंक यू। सबसे पहले सब बंदों को, सब लोगों को, सब वॉचर्स को, सब डेफ टॉक्स के जो मेरे दोस्त हैं, मेरी कम्युनिटी है, एक्सेप्ट फॉर ये 2-3 जो चाइनीज यहाँ बैठे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। बता देना कहीं डाउट हाँ, हो गए तो मेरे साथ पूछ भी लेना, आपका डाउट भी प्लीज क्लियर कर। प्लीज, मेरा ईमेल आईडी नीचे है, तो आप लोग प्लीज लिख सकते हैं मेरे को। और मैंने बोला भी था यार, शी जिनपिंग से बात करा दो, मैं उसको थोड़ा समझा दूंगा, ऐसे मत करो यार। हमारा डेफ टॉक्स में ना बड़े स्मार्ट से लोग आते हैं, मैं तो बच्चा हूँ बेचारा, बट काफी सारे स्मार्ट से लोग आते हैं। एक पॉडकास्ट कर लेंगे उनके लिए कि आ जाओ यार, हम विल सॉर्ट हिम आउट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे सर, मैं जरा एक लास्ट सवाल पूछता हूँ सर आपसे। देखिए सर, एक कंट्री जो होती है सर, उसका एक सेटअप होता है सर्वाइवल का सर, जो मर्जी कह लीजिए सर, एक सर्वाइवल का एक सेटअप होता है। ठीक है, एक दैट सर्वाइवल सेटअप जो होता है सर, वो हर किसी चीज को तोड़ेगा, हर किसी चीज को पीछे छोड़ेगा फॉर वॉट एवर रीजन। या यू लुकिंग फॉर समथिंग सर? नहीं नहीं, मैं एक वो किताब देख रहा था, दिख अच्छा, जाएगा, ला के दिखाऊंगा नाउ नाउ लोगों को। हाँ मैं एक एक इस चीज के बारे में एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि यार ऐसा है, ये जो एक सर्वाइवल सिस्टम रहेगा सर इसके अंदर, अब शी जिनपिंग तो देखते हैं ना, यू से भाई ही इज टेकिंग द कंट्री टू डॉग्स। अब बेचारे, आई लव डॉग्स, तो ऐसे मत बोलो, ही इज लिटरली रिवर्सिंग इट, एंड आई एग्री विद दैट चाइनीज ब्लॉगर जो बोल रहा था ये तो ड्राइवर इन रिवर्स है। सर इसको कितना टाइम तक टॉलरेट करेंगे सर ये लोग? बिकॉज देखिए, जो भी है, चाइना का एक प्लान था, और वो प्लान काफी हद तक दुनिया में धीरे धीरे करके एक्सेप्ट हो जाता अगर ये लोग थोड़ा बिनाइन रहते, अगर प्यार से लोगों से बात करते। एंड मैं सही में बोल रहा हूँ, आई एम सेइंग दिस ओपनली, अगर इंडिया चाइना की आज अगर अच्छी दोस्ती होती सर, अगर आज अच्छी दोस्ती होती सर, दुनिया में किसी में दम नहीं था कि हमारी तरफ, इस सब कॉन्टिनेंट या इस रीजन की तरफ देख सके। एंड दैट शुड हैव बीन द आइडियल सिनेरियो। दोनों बड़ी पावर्स हैं, इतनी जबरदस्त सिविलाइजेशनल पावर्स हैं, आप देखिए क्या है। तो ये चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का सर क्या सिस्टम रहेगा जो अपने आप को वो करेक्ट करेंगे, क्योंकि इस बारी बेदा बेदा बताता है। हूँ। और हाँ जी गाइज, सबसे पहले मैं जरा एक एक चीज बोलना चाहूंगा यार, प्लीज लाइक शाइक कर दो यार सर जब तक आते हैं वापस। हाँ, ओके, द एग्जैक्टली व्हाट आई राइज एम एंड द आस्किंग। फॉल ऑफ ग्रेट एम्पायर्स, पॉल केनेडी, ये किताब पढ़िए और इसी के बेसिस पे मैं आपका पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। आई एम नो, श्योर टंग शाओपिंग हैज रेड दिस बुक। आई एम रीरीडिंग इट for the third or fourth time. First time I read it when I was doing this, when I was studying for staff college. That was about 88. तभी ये निकला था. Second time I read it when I was in Bangladesh staff course, 93, 94. Third time I read it when I was ADGMOB. This is the fourth time I'm planning to read it again. Every time you draw new lessons because your vistas open up further. You're more mature to understand things. But एक classic इसमें है, the rise and the fall. You are rising, नीचे से ऊपर उठना शुरू होते हो for about 100 years. Takes another, it's a 400-year cycle. Another 100 years and you're right at the top. Then the next 100 years, you are on the top and you start declining. And the last 100 years is your decline to the bottommost, and then you rise again. जी, You can't speed these things up because since he calls it an empire, so I'm sure smaller nations would have smaller cycles. जी, Bigger the country, more time it takes to develop everything.
जल्दबाजी कर गया। इससे पहले जल्दबाजी की थी, एक्चुअली जल्दबाजी शुरू हुई थी 2006 में, हू जिनटाओ व्हेन ही कॉल्ड 41 heads of state of Africa and told them that I will give you the money, don't bother about the Americans. Americans and all became angry, and he started talking of harmonious rise and nahi, and he kept back. But he paid the price, in the sense the PLA paid the price. The till then they used to buy एक जनरेशन पुराना वेपन्स सोवियत यूनियन से, रशियन से, और ये अपग्रेड करते थे फ्रांस, इजराइल, यूएस, जर्मनी, अमेरिकन सब सिस्टम्स देके उसको अपग्रेड करते टू यूज इट। ओके, बट वो रिवर्स इंजीनियरिंग करते थे और उनसे ज्यादा चलता नहीं था, वो बंद हो गया 2006। उन्होंने तभी शुरू किया था करने के लिए। दैट इज वाई टाइप 96 टैंक इनका बल्क टैंक है जी। 99 को रिवर्स इंजीनियर करके किया, इट हैज कम वेरी एक्सपेंसिव। टाइप 96 इज द वन जो T-72 को अपग्रेड्स वगैरह करके बनाया था, वही खड़ा हो गया। इनके J-10, J-11 उन्होंने हेल्प किए थे, उसके बाद सब बंद हो गया। अब J-16 जो बना रहे हैं, अब जो कुछ बना रहे हैं, ये कितना इफेक्टिव है, गॉड नोस, बिकॉज नाउ इट इज ऑल देयर्स। इंजन का तो शुरू से वेस्ट हैड नॉट गिवन देम द टेक्नोलॉजी। सो उसने इसीलिए कहा था 100 years, 100 years तक चुप रहो। मतलब he felt that in those 100 years your rise would have started. If they had kept quiet, अभी देखो डिक्लाइन हो रहा है यूएस का, people would have felt the need for Chinese. And like you mentioned, if China, India had joined together, 96 में the Russian Premier Primakov had given the doctrine of Russia, India, China as equals. It fell because China wanted to be the boss and dictate. China का शुरू से ही ये गड़बड़, ever since they were formed, the PRC, Mao had always felt that all the anti-colonialists जितने भी होंगे उनका लीडर मैं रहूं, they will follow my leadership, and that's why he was very anti-Nehru, and he was very anti the non-aligned. He was very angry because de facto everybody was looking up to Nehru. All said and done, colony, everyone was looking up to somebody who was smart and who could speak English well. And Nehru had all that. He was an excellent, charismatic person who could speak very well. Given a script, he could speak very well and put across his point very well. So everybody was bowled over by him. He had excellent relations with the crown, even after we had become independent, which Mao didn't like. So when you try to be the leader even before you have the strength, then you face this penalty. और शी जिनपिंग का तो पूछो ही नहीं है, he thinks he's bigger than Mao. पता नहीं सर इसके, I mean, I don't like to normally comment on the person because देखिए, नहीं, he is a, see, Deng Xiaoping had given a very clear policy, is 24 characters. Oops, sorry. Don't be the boss. Never take leadership. Bide your time and hide your claws. Fifth leader, in his second term, that is last term, Xi Jinping should have ordered a study to see, are you slipping from that 100 years? Or are you in path, any course correction to be done? And to do that course correction, उसने स्टडी क्या करना, अपने पहले टर्म से ही दादागिरी शुरू कर दी, and you're finished. Actually you're finished. Now you look at it today, जो बंदे इसने अपने पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में डाला है, you look at his premier यार, इकोनॉमिक्स का स्पेलिंग बता दे वही बहुत है उससे, तो he doesn't know anything, and he's supposed to be premier, has traditionally always been the one who looked after the economy. वो बात अलग है, शी जिनपिंग ने कब्जा कर लिया तो शी जिनपिंग को कौन सा इकोनॉमी आता है? No, between the two of them they don't know. Now quietly in their committees बाहर से वो इकोनॉमिस्ट को लेके आ रहे हैं, और सबको पता है यार, if you don't tell what the boss likes, you are finished. कौन बोलेगा? Typical case पाकिस्तान,
Imran Khan, for all his follies and foibles, when he became the president, he wanted somebody to come as the finance minister. First name दिया, who was the leading economist with the IMF. नहीं ये अहमदी है, उसको भगा दिया. दूसरा नाम दिया, अगेन अ लीडिंग इकोनॉमिस्ट वर्किंग विद वर्ल्ड बैंक. नहीं ये शिया है, ये काम नहीं करता. यार अगर इस चीज में जाओगे कि ये शिया है, ये सुन्नी, अभी देख लो किसको लाके रखा है इकोनॉमी के बाद. तो चाइना में क्या है, ये हान है, ये नॉन हान है, सेम थिंग. करेक्ट. तो चाइना में अभी अब नहीं, पहले तो यू हैड लीडिंग इकोनॉमिस्ट एंड ऑल. यार ली केशांग एंड ऑल वर प्रॉपर इकोनॉमिस्ट who have studied and done their life in economy, and he is a premier. अब ली कैंग को क्या आता है यार, घंटा आता है इकोनॉमी के बारे में. शी जिनपिंग को क्या आता है इकोनॉमी के बारे में? नथिंग. Now the two of you are sitting. He is the head of the leading small group and he is the head of the policy execution. क्या, what does he know about it? अभी इसीलिए तो तड़प रहे हैं, इकोनॉमी का समझ नहीं आ रहा क्या करना. ठीक है. अमेजिंग सर. जरा क्वेश्चन ले लेते हैं, काफी सारे सवाल हैं. Loads of people watching, touching 1200 people watching, so this is obviously touched a nerve. And इसमें से 3 4 5 चाइनीज भी दिखते हैं मेरे को. एक कोई पता नहीं इस पे अटैक कर रहा है. हमारे बंदे भी मतलब तलवार लेके चढ़े हुए हैं. अगर if this is how the Chinese want to fight, और ये शी जिनपिंग की बॉट आर्मी है, आई वुड रेकमेंड, मेरा एक पर्सनल मैसेज है शी जिनपिंग, सर आप दूर रहो, पिट जाओगे, मत करो. डोंट टेक पंगास विद इंडिया. यहाँ तो तुम यूट्यूब में एक ऑडियंस को संभाल नहीं पा रहे, वहां क्या लड़ोगे आके यार. एंड यू नो, एक ही उसके पास एक ही जोक है, फेयरनेस क्रीम का. ठीक है, वो लगाई जा रहा है फेयरनेस क्रीम. तुमने फेयरनेस क्रीम नहीं यूज करी, फेयरनेस, हाँ भाई काला हूं, क्या करूं. ठीक है, मैं बड़ा खुश हूं भाई अपने साथ. इट्स यू हु गाइस आर दिस थिंग. तो आई मीन दिस इज द लेवल दैट दे कम डाउन टू. आप सोच लो, इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन दे कांट होल्ड. दे कांट कम एंड टेल यू कि साहब आप इस बारे में बात करो, इस बारे में बात करो. ये चीज मैंने देखी है सर. ये चाइनीज आते हैं, दे आर जस्ट कमिंग टू छुतरी छोड़ने के लिए ना. एक पटाखा छोड़ के मैं भाग जाता हूँ यहाँ पर. एंड मेरे दूसरे शोज में भी आते हैं ये लोग, बस छुतरियां छोड़ते हैं. दे विल नॉट काउंटर यू सर. काउंटर करने की कैपेबिलिटी ना है, ना ना थी, ना है, ना रहेगी. ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी गेम है. और ये चीज एक्चुअली मेरे को ब्लॉक करने में अच्छा नहीं लगा. मैं नॉर्मली किसी को ब्लॉक करता नहीं सर. कोई आई डोंट डू इट. जरूरत नहीं है, बिकॉज जब तक कोई गाली वाली नहीं, वो 50 सेंट उसको मिलेगा नहीं ना. हाँ, बेचारा अनएम्प्लॉयमेंट है. अब चाइना में नया रूल आ गया है ना सर, 2 hours a week अगर आप एम्प्लॉयड हो तो यू आर एम्प्लॉयड. तो ठीक है, आप हमारा 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट होगा, बेचारे को आधा घंटा कहीं और जाके कुछ करना पड़ेगा. एटलीस्ट he'll show himself as he'll earn his 50 cents. 50 cents, तो कोई बात नहीं. बट see the level of these people. They will not come and argue with you on facts. ये लोग आपके पास नहीं आएंगे बोलने के लिए कि साहब आप ये चीज गलत बोल रहे हो यार. read this. This is something that I'd like to recommend to you. Or go to this point. This is where you people have gone wrong. Just check and let's have a conversation. ना. वो नहीं करेंगे. वो नहीं करेंगे. There is just no ways. But anyways, let's go to the questions, guys. Before I do, सबको लाइक का तो रिमाइंडर देना ही देना है. आज लोग ज्यादा हैं तो लाइक का टारगेट भी ज्यादा है. अभी तो 500 लाइक्स है हमारे पास, कम से कम नहीं तो 700 लाइक्स. 700 लाइक्स इज समथिंग दैट वी नीड टू हैव. आपका सपोर्ट रहेगा तो ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा. एंड दैट इज व्हाट वी वांट एट द एंड ऑफ इट. सो थैंक यू सो मच. आप लोग मेरी तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं. क्यूआर कोड डायरेक्ट कंट्रीब्यूशंस के लिए है, या आप मेंबर बन सकते हैं, या फिर आप सुपर स्टिकर्स और सुपर चैट्स भेज सकते हैं. सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा नवीन साहब. Thank you so much for your contribution, brother. He says withdrawal from LAC would show China and Xi Jinping's weakness. Can the dictator be pushed to de-escalate without an off-ramp? What off-ramp would that be? There's no off-ramp. Now I'm not even bothered about him saving face. If he loses his face, so be it. Enough of the nonsense that he has done. So that's why I said you expand and expand all your demands. If he says you can't do it, to hell with it. We will escalate on the border in areas where we can hold, and we hold. Let him lose further face. इतना push करो कि CPC becomes compelled to not only clip his wings, just boot him out.
This is for the betterment. I'm talking for the people of China. The earlier he is booted out, the better for the people of China. इतने China. फ्लड्स हो गए, ड्राउट हुआ है, अभी फिर फ्लड्स हुआ है, कुछ बात भी कर रहा है, कितने मरे हैं. बाहर ही When नहीं he निकला has सर. opened up, when he has opened up suddenly again, zero COVID के बाद, with no health service background, nothing background, millions have died of COVID again. Yeah, जी, has he जी. spoken about it? I think for the betterment of people of China. That's why I always separate CPC from China. CPC is not China. It's a political party. And the earlier they get booted out of power and people take control of China, the better for the people of China. And once it becomes better for the people of China, it will be better for the region. Absolutely true. So JP, thanks so much for your contribution. Jen sir, on 12th August, my God, you said JVP, okay. you will not come Okay, on 20 I August got your 19th. You thought. were away August That was the 19th. same problem which we had with Chandrayaan 2. Okay. It takes almost about 45 to 50 seconds for your signal from the ground station to reach the module. And then comes that, what is the time delay, the mechanical time delay it takes to execute. Signal reaching is one thing, then mechanically things have to move for it to do. जी. Okay. So it becomes a bit difficult to control from. That is why जो हमारा तिरंगा point है, where Chandrayaan 2 managed to plant your flag but it crashed, is because, and Luna 25, same thing. What we did correct this time, that it was AI enabled. You used all the data that you got from Chandrayaan 1 and 2 to make it AI enabled. You gave it a larger space than what you sized. I think 4 kilometers by 2 kilometers, some size you gave where it should land. And only if a correction was required, you gave it a correction. And you fed in the data that it reduces its speed drastically when it comes to land. So that is why the last 7 minutes, they were calling it the last 7 minutes of torture. You never knew. First time you were doing it, AI enabled hota hai ki nahi. Tells you India is a master of IT. And it worked. And it landed. It worked superbly. You And it didn't try saved to gas on top you of it. didn't try to control it from here. Here was only if the AI was drastically going wrong, then to give correction. You didn't have to give any correction. It corrected itself and landed. Naveen, once again, thank you so much. Discounting the short midterm turmoil, shouldn't the world be thankful to Xi, who took the lid off Deng Xiaoping's long-term plan? Their original plan was far too sinister. Interesting theory. Well, we are looking at it at hindsight in the manner in which things have panned out today. Let us say Deng Xiaoping himself had solved the border issue and made good relations with India, and Primakov for Russia, India, China banda. Where would it have left Europe and NATO? Think about it. Kya hota? Maybe the geopolitical events would have taken a different course. We are looking at it from today. So we got to go back in time and try to visualize what pathways, what were the options, what could have happened, and try to build scenario there. अगर 96 में 97 में you had come, 98 Putin had come in 98 99, this structure would have been very strong. Would US have had its way in Ukraine? No. How many countries would have liked to join this? Pakistan इकलौता पड़ जाता, कचरा हो जाता उसमें. जी. How many other countries would have joined you? Then what would have happened? Would the NATO expansion have taken place? I don't think so. So things change based on, like I always say, no, things change as per the choice that you make. You make a choice today, you can't look back and say that choice was wrong. No, that choice was based on what was then. So would it have been sinister? There was still time to go. अभी तो मिडवे ही था, अभी तो और
2085 तक जाना था. Would they have succeeded, not succeeded? किधर जाते, क्या होता? So there are many ifs and buts, can't say. जी. Pawan ji, thank you so much for your super sticker. He comes from Malaysia, sir. So Oh, an interesting this thing. Aditya, thank you so much for your contribution. Sir, I disagree. India needs a Xi Jinping as a ruler. ये मैं बोलता रहता हूँ यार. yeah, Aditya, I know where line you're taking, that he is the Imran Khan of China. बार बार बोलता रहता हूँ मैं ये चीज. I laugh. तो ऑडियंस बेचारी कंफ्यूज. यार आदि तो बोलता है शी जिनपिंग चाहिए, सर बोलते हैं भगाओ इसको, ये क्या हो रहा है? सर सीरियसली बात कर रहे हैं. मैं थोड़ा बोलता हूँ यार रखो यार उसको, वो अपनी कंट्री को बर्बाद कर रहा है और क्या चाहिए. There is no problem. See, I the want to address. people of China are not that kind of radicalized fundamentalists like people of Pakistan. जी. That's why when I talk of Pakistan, I said जो candlelight लेके हा हा करते हैं वो लाला लैंड में. There's nobody there who likes you. Thank you. They look at you as kafirs, and if you don't convert by sword, then it is okay to kill you. That is their life. So bulk of them have been taught this in their madrasas and government schools since 86, 85, 86. ज़ियाउल हक के टाइम से वो चेंज नहीं हुआ. तो ये है स्टेटस उनका. मे बी 80s के पहले होता होगा, आई डोंट नो. I was too young at that time to understand these things. But today, I don't think so. Chinese people are not that radicalized. That is true. So, And सब नहीं है कम्युनिस्ट पार्टी के members, so obviously. so see, he might say 1.25. I still claim they are 1.4 billion. Because while one child policy है, second child, third child भी आ जाता है, but they have no, they are not there as far as in the counting as far as the Chinese are concerned. They have no rights. Okay. So they still have 1.4 odd billion people. Only 90 odd million, 90 million. 1,000 million is a billion. तो अगर 1400 मिलियन पीपल में से 90 ही तो है यार कम्युनिस्ट पार्टी के बंदे, और उसमें से भी हार्डकोर आइडियोलॉजिकल में भी 10 मिलियन एट बेस्ट. रेस्ट इज, अगर नहीं बनेंगे तो जॉब अच्छा नहीं मिलेगा, कॉलेज के लिए कंसेशन वगैरह नहीं मिलेगा, आएंगे वो. Sir, I want to address this one. Tristan, dear Indians, solve your problem in Manipur. Tristan, don't worry. First, It's before already solved. Things are going apace. I'd We are not recommend. like the Americans and the West who go with attack helicopters and rockets and bombs and missiles and all to sort it out. We win the hearts and minds of people and carry forward, and things are going apace. It will happen. Don't worry. And I'd recommend. We are not even talking of China collapsing. Sorry. CPC collapsing is different. That doesn't mean China collapsing. China collapsing You is are too mixing it different. up. CPC is not China. China is not CPC. Sorry. It's a political party. It's like saying that if Democrats lose, America collapses. Please be clear of what you're asking. And yeah, Tristan Saab, I think you need to kind of go back either to your Chinese brothers and sisters or go back into the folds of BBC, which I think that you've come from. So please continue. बोलते हैं ना आगे बढ़. बॉम्बे में क्या बोलते हैं, एक डायलॉग है ना, हवा आन दे. I mean, I don't like to say such things, but I think to such people, that's what needs to be said. Karan, sir, this is a very, very silly sort of a narrative that is spread around by Karan, a lot of people. I come up from a unit which fought 2 wars with the Centurion tanks, which was made in 49, 48, 49. And the Pakistanis had the state of art of that time supposed to be pattern. In 65, in the battles of Philora, Chavinda and all, my single unit destroyed 74 patterns to 9 of ours. In the battle of Basantar, again, my unit, we destroyed 39 patterns to 7 of us. It's not the technology which matters, it's the man behind the weapon who matters. Next, go to the Air Force. We had Nats and we had Hunters, Marut. They had the state-of-art sabers. What happened?
आदमी होता है, how you use the weapon, do you know how to use it, what kind of training you have to utilize it, that's what matters. Our Suit 20s Air Force, which has gone, spun body circles around their F-22 and F-35 exercise में, उनको Yeah, yeah. घंटा नहीं पता चला क्या होगा. State of art. So Karan ji, I come from a line of thinking which says yes, technology, yes, but it is the man behind the weapon. आम आदमी आता है यार, he is not technologically up and about. He has to absorb that technology and use it. If you give him a too hi-fi a thing, he won't even know how to use it. तो फायदा क्या हुआ? So it is how लड़ाई में जिसने पहले गोली चला दी, आम बोलते 84% चांस ऑफ सक्सेस. ठीक है, तो जो बच गया है तो ही हैज अ 16% चांस ऑफ सर्वाइविंग and 84% of that 16% to down you. That means if I see enemy sees, I fire first, I have 84 chance of success of killing the enemy. He has barely 9% chance if he has fired second to kill you. Remember that. So if the technology delays you, you have won the day. If it delays the enemy, you have won the day. If it assists me in being fast, that is what is technology. ये AI, शेआई सब बात करते हैं ना. It has to enable me to be able to fire fast. Take a decision fast and fire fast. Observe, orient, decide, act. This loop has to be fast and I fire. Then I survive. If it is going to delay taking more time, दूसरे ने उसका कम टेक्नोलॉजी था बट रफली टेक्नोलॉजी लेके उसने गोली चला दी, मैं तो खत्म. Technologies don't win wars. Don't get carried away by Hollywood. Batraji says correct. Talk tough with China and remain ambiguous in your claim. If he is willing to concede on point, bring up other demands. बिल्कुल सही Absolutely. बत्रा जी, यही मैं कह रहा हूँ. Talk his language. So Prashant ji says the plot thickens. NATO and CPC are equally hurt. Both are crying out, spreading disinformation. We are on the right track. Yes sir. Interesting comment. हमने दुखती रग पे हाथ रख दिया है. Crime. Arun Dhawan says, fact check, Argentina is not neutral. In South American countries, that is pronounced Argentina. Not as much, sir. I would Nobody beg to is so differ. pro-China. They were, but these days, based on the debt that is spiraling out of control in many of these countries, they're having second thoughts on China. Fiji आप देख लो. Fiji का इतना था. I hope you remember they were the PAP was virtually policing Fiji. उनका वो कैपिटल कौन सा जगह है, वहां से I think 50 of their dissidents were arrested by the PAP and flown off. Ji. They were conducting training on these for the Fijian police. आज देख लो, they've all been booted out. So you may get initially the entry that Bani Ramana क्या नाम था उसका, he was very pro, बहुत पैसे मिले थे, वो इलेक्शन हार गया, रात गई बात गई. Arindam says, all the things that you're saying India should be doing to China, why doesn't the government do it? Or they are doing it? That's what. Maybe, I don't know. The fact that they have started, maybe they have given it a thought. You find 3 chiefs attending in Taiwan, briefed by the MEA here. They have a sitting with the MFA also there. What message has been carried, you don't know. A write-up comes that they are looking at furthering India-Taiwan relations and considering options for India should China attack Taiwan. Now that's a very telling statement. That should worry. And another service chief is attending, sharing the platform with the ex-PM of the
Tibetan government in exile, and one of the Uyghur activists, क्या नाम था, Umit Amit. shared the platform, and he speaks about Uyghur independence. These are all messaging. It doesn't happen if the government is not wanting to do it. I'm only recommending now that you have started it, take it to the next level. Xi Jinping might have usurped power by force, but to what extent he commands the personal respect among the Chinese polity who believe his ideology? May I, sir? May I? May Yeah, I? yeah, May I? May yeah, I? yeah. May I? Please, वो please, स्कूल में बोलते थे please, ना, please. अगर ये यार, if he has to remove 4 of his generals in one day, need I say more? और ये वही जनरल्स है 3 महीने पहले इनके साथ फोटोएं खिंचवा रहा था, सेल्फियां ले रहा था, और हालत देख लो. So need I say more, sir? Please. See, there is a saying in English: you live by the sword, you die by the sword. I'll That is there, sir. leave it at that. That is there. Rohit Saab says, ask General, what are the chances of mutiny in the PLA in case of a warlike situation in South China Sea? Uh, you see, the PLA is affected. The generals are worried. We've spoken about it earlier also, where Aadi was asking that will any colonel want to become a brigadier? Because knowing that something happens and he gets sacked. Or will somebody want to go up to a senior colonel's rank? But I don't look at it from within the PLA. The PLA is coming from the society. Their extended family is part of the society. If the society is in turmoil, can that man be not affected? That's the logic I used to apply for Pakistan also, na, sir? So you have a problem, and he realizes that there is a problem, and that is why he keeps telling again and again and again, rubbing it in, that PLA must listen to the government's orders, the Communist Party's orders. Have you heard any of our or any other countries' heads of the state, when they are addressing their army, telling that you must obey? It's a dung thing, yeah. You tell it only if you are worried that they may not obey. And that is when he will get overthrown. And then Communist Party will also worry that will the Communist Party also get overthrown. So Communist Party, that's why in one of my previous shows I had said, they have to take a call when to clip his wings completely. First step they have done is the economic policy has been reversed, specifically of private versus SOEs. And abhi tak he has not made a peep. What else and what all wings have to be clipped? If they don't clip the wings, like what you are saying, it could happen. Not just, may not be only the PLA, maybe PLA and PAP, or maybe the PAP themselves. They have the weapons. They have the weapons. True, sir. RK Saab says, it's a comment that he says there was a brief grab of a brief exchange between Xi and Modi. She was trailing Modi like a hungry puppy trailing the master, but the master ignored the puppy. It was a great treat for sore eyes. That was true. बोलना था, And मोदी साहब का ना एक ही ये जो स्टाइल है ना, उंगली दिखा के बात करते हैं. सीधा. लाउंज में जो बात हुई थी क्लियर कर दिया था, पीछे नहीं जाओगे, कोई बातचीत नहीं होगी. हाँ. अब तो वो इसीलिए जा रहा होगा कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने के लिए. मोदी जी वाज नॉट इवन इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम इफ ही कांट डू दिस. जी. Anikesh says, given how the delicate balance of the world is currently, do you think this is how a staring contest of who blinks first before all hell breaks loose? डोंट वरी, चाइनीज विल ब्लिंक. इतना दम नहीं है. We've Prashant seen ji it in says, Samdaram. I've seen it in my 4 years in the Northeast. They blink. खड़े हो जाओ तान के, they blink and go back. I mean, Yes, Prashant sir, that is what I'm saying. He is most worried. आप वही देख लो, this is only his second visit out. एक वो रशिया गया है, उसके बाद यहाँ आया है. जब से कोविड आया है, this is his second visit.
And this time he was looking so disturbed. He was not that confident. He didn't exude confidence. He is worried. He Yeah, is that worried. is something. Yeah. That is something I saw. He is worried. बहुत घबराया हुआ था, and his body language was like, यार, where am I stuck? You know, where am I stuck? ये क्या है? Kun, I must say that's a very interesting name. Uh, Ask Adi, does Bharat have any plans on creating marine expeditionary force to be a military superpower? I We need a blue don't water need an navy and a marine force. expeditionary. See, expeditionary force is imperialism. I don't need an expeditionary force. We have amphibious brigades जी. to protect our littoral areas. That's it. So I have the amphibious brigade available. I don't need. I don't have any. Uh, Historically, I may have had many, yeah, but thankfully in India we are realists. You don't go back to, like, I laugh when people look give map and say we must go back to अखंड भारत. अबे यार वो हिस्ट्री था यार, पता नहीं कितने हजारों साल के पहले था. Things have changed on ground. People all have changed. Everything has changed. So now you need to be a net security provider to the region. So if they have a natural calamity and you need to send somebody, I have the amphibious force. I have an airborne force ready available. People don't remember 87, I think it was 87, 88. We helped the Maldives. The LTT had come to grab power out there. A para brigade landed there and cleared up everything, and all those people who had come were captured. जी, Their जी. head of police was arrested and captured, and I think their uh, prime minister or the deputy was captured. All got released. The navy also got into action. They were trying to escape in a ship that was caught. Hmm. People don't remember those things, sir, जो हमने किया हुआ है. I've done a show with General Bhatia on this. General Was Bhatia part is of being done. uh, Yeah, he was a he part of was that team. very much part of the brigade and part of the planning. Yeah, he was the BM of the brigade. Yeah, so I've actually done his story of this particular operation. Those of you who are And interested, this please watch it. entire operation was done with tourist maps, by the way. Yeah, and 16 hours it was finished. Yes, it was done. तो हमने किया हुआ है यार, ऐसे नहीं कि नहीं किया. So last few questions, sir. Last three, as a matter of fact. China will go the Soviet way. Tibet, Xinjiang, Inner Mongolia will be free. India should take back Aksai and Mount Kailash with प्रेम से होगा Mansarovar. यार, प्रेम से होगा. बूंद बूंद से घट भरे, घट भर रहा है, काफी भर चुका है. JP, thank you so much for your contribution. He says, Generals are waiting for your Tamil Sanskrit show. Kis din? Either the next or the Saturday after that. I've just come back, सांस ले रहा हूँ. इनिशियल स्लाइड्स तैयार कर दिए थे, बाकी मैं तैयार. अच्छा, बिफोर आई टेक द लास्ट क्वेश्चन, मेरे को एक ऑडियंस से क्वेश्चन है. मैं और जनरल नारायण एक चीज सोच रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ एक टॉपिक पे बात करने के लिए हर सैटरडे को, जो हम लोग ये जो सीरीज करेंगे वो तो करेंगे, बट जनरली सैटरडेज को हमको एक शो ऑन जियोपॉलिटिक्स करना है, जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते में क्या हुआ है उसके बारे में 3 4 5 चीजों के बारे में जो मैं एक वहां पर डालूंगा कि ये चीजों के बारे में हम बात करेंगे. हाउ डू यू सी एज दैट प्लान? Instead of just sticking on to one particular subject, we can talk about whole lot of different things. जो The डेवलपमेंट्स world हुई है. is weak. हाँ जी, द वर्ल्ड दिस वीक सॉर्ट ऑफ अ The थिंग. world is weak. हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो प्लीज 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 आई रियली रिक्वेस्ट आपके कमेंट्स, आपके चैट्स, आप मेरे को पर्सनली भी प्लीज लिखिए. आप बताइए, सर आई हैव बीन टेकिंग a lot of Yeah, feedback. what they want, Yeah, so आप जैसे whatever they want. बताएंगे we will plan it like that. uh, okay, this is done, and the last super chat is from Jyotish. Thank you so much. He says, sir, what do you say about China's support for LTTE? Not China. Let's be Chin clear, we support, sorry. supported, we gave them a lot of weapons, Yeah. but LTT, China supported the Chinese army, the Sri Lankan army. The weapons and everything went to Sri Lankan army. And LTT used to get a lot from the West, by the way. Huh? They had a huge office in Sweden and Norway and all those places. Sweden. That's why you still find Norway is the one which is pushing for genocide against Fonseca, General Fonseca, who was the head of the Sri Lankan army when they killed his son. General Fonseca's son used to work with me at one time, sir.
So it is Norway which is pushing it, by the way, and Yeah. they still have a big office out there. Yeah. यार श्रीलंका ना इज नॉट एज सिंपल एज जो हमारे पेपर्स में दिखाते हैं. बहुत हिस्ट्री है उसके अंदर. देयर इज अ लॉट. एंड हम लोगों ने बेवकूफी करी थी घुस के, क्योंकि इतने सारे इतने सारे लोग घुसे हुए थे. हम एक और जाके घुस गए वहां पर. एंड द बेस्ट थिंग वाज व्हेन वी वेंट इन, सब लोग भागे वहां से. तो पूरा कचरा हमारे सिर पे आके गिर गया वो फिर. सो दैट्स व्हाट हैपेंड देयर. एंड द मिनट वी लेफ्ट, ऑल ऑफ देम केम बैक एंड दे वो सब कुछ कचरा कर रहे हैं. श्रीलंका एक बहुत डीप डिस्कशन है, क्योंकि तभी आप आज भी देखिए श्रीलंका के जो रिएक्शंस होते हैं ना, वो बड़े वियर्ड से होते हैं. दे नेवर स्टिक ऑन टू वन थिंग. कहीं पे इधर जाते हैं, कहीं पे उधर जाते हैं. दैट्स द रीजन व्हाई, बिकॉज उनकी कंट्री में इतना टग ऑफ वॉर होता है चारों तरफ से. दे आर नॉट एबल टू कम टू अ सेंटर पॉइंट. और वो काफी टाइम लगेगा श्रीलंका को आने के लिए. सर करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग सर. Yeah, and through the 80s and all, China had no method of giving anything to anybody, whether it be Sri Lanka or the LTT. They did not have. छोटे मोटे small arms होते थे उनके पास. But a lot of their weapons used to come from the west. It used to get smuggled in through India. तमिलनाडु के थ्रू जाता था. ओपन कोस्ट है आपका. You were not your coast guard and all were not that strong at that point in time. So a lot of things had gone here from here. That's the way it was. And sir, सबसे पहले मैं, I mean, sorry, please. Look, see, we should, like I keep saying, never look at an incident which happened 30, 40 years ago with the lens of today. Today. You go wrong. You have to see what was then there, whose capability kya tha, and then arrive at some lessons from there. अगर आज का देख के आप 40 साल पहले क्या किया उसका लेसन आज का देख के आप करोगे तो आप गलत जाओ. Sir, I'd like to just say, I mean, this is such a beautiful talk, क्योंकि बड़ा मजा आता है मेरे को तो सैटरडे आफ्टरनून्स आपके साथ स्पेंड करके. मेरे को बड़ा मजा आता है. एंड आई एम श्योर I hope the feeling is mutual, and you know, yes, it is. Yes, I look forward to it. I was very sad I couldn't do it. Yeah, we came अरे back. नहीं सर. I came back at how much? 9:30 at हाँ, night. लेट नाइट. हमारी बात हुई थी सैटरडे को सर. वी स्पोक ऑन सैटरडे. लंबा चल गया तो था, लेट. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ऑडियंस को बताऊं कि मैं और सर कभी कभार बात करते हैं, तो हम लोग बातें करते 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 कहाँ टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता. तो हमारे तो आपस में जो पर्सनल पॉडकास्ट भी होते रहते हैं. तो actually there was a meeting supposed to have been with the NSAB chairman. Initially Saturday tha, but then we had the meeting on Friday itself. And then Saturday to then my talk was late in the evening. Last था. आपका दोपहर में होने वाला था. करेक्ट सर. लंबा चल गया. उसके बाद हेलो हाय लोग काफी आए हुए थे, मिलना मिलाना बात करना. took time. Sir, my gratitude to you and Thank of course you, all thank the you. audience जिन्होंने टाइम And निकाला thank हमारे you, लिए. bhai, all the audience. It's your love and best wishes which keeps me going at this age. Thank you so much, sir. जय हिंद, Thank you. जय भारत. Jai Hind, Jai Bharat.